Very good morning, students. I hope you all are doing great in your studies and revised your previous chapter. Today, we are going to start with chapter 4, which is queries, forms, and reports. So, without wasting any further time, let's dive into the chapter. The name of our lesson is Working with Queries, Forms, and Reports, and the topics which we will study here are what is a query, setting a relationship between tables, creating a query, specifying simple and multiple criteria, creating a query in Query Wizard, what are forms, formatting a form, what are reports, and exporting a report. So, a database collection hota hai of information that is organized so that it can be easily acquired, managed, and updated. Computer databases typically contain करते हैं aggregations of data, records or files containing information on about sale transactions in transaction with specific customers. So what is a query? Query एक request होती है for data and information from a database table या फिर combination of tables. This may be generated as results returned by structured query language. In our daily life, we make various types of queries to get particular information. For example, which students are scoring above 85% marks, which students live in sector 16 Noida, and so on. We can make quick decisions depending on that criteria. Let's learn the concept of queries with the help of example given below. In the students table, we have record of class 8 and class 9 students. Suppose we want to extract the record of students of class 8 and class 9 who live in Noida. जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है जहां से हमें क्या करना है, ये एक्सट्रैक्ट करना है ये क्लास 8 और क्लास 9 के कौन से स्टूडेंट्स हैं जो नोएडा में रहते हैं. We can find this with the help of queries. So queries are made on tables and the results are shown in the form of a table, that is in a group of rows and columns with a set of records जो मैच करते हैं हमारी गिवन कंडीशन को. Microsoft Access प्रोवाइड करता है different types of queries, select, parameter, cross-tab, action, and SQL, which is structured query language query. Now, setting a relationship between tables. Relationship कुछ links होते हैं जो relate करते हैं field को in one table with the same field in another table. In Access, आप store करते हो data in multiple tables. तो bring करता है उस information को together. You require to define relationships between the tables. Once you have defined relationship between the tables, data from both the tables can be used by query, forms या फिर report. Relationship work करता है by matching a field with the same name in both the tables. Generally ये जो matching fields हैं, they are the primary key from one table जो indicate करती है हर एक record in a table, and foreign key जो कि जो करती है इन अनदर टेबल. फॉरेन की एक वैल्यू है इन वन टेबल दैट मस्ट मैच विद द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल. नाउ टू सेट अ रिलेशनशिप हमें दो टेबल्स क्रिएट करने हैं. वन विद द नेम स्टूडेंट्स जो कंटेन करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स जैसे देयर रोल नंबर, फादर्स नेम, क्लास, एड्रेस एंड सिटी, एंड अदर टेबल विद मार्क्स जो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट का रोल नंबर, परसेंटेज एंड ग्रेड. नाउ ओपन वन ऑफ देम इन डेटशीट व्यू. A select query retrieves data from one or more tables and display करता है वो record set in data sheet, and you can also use select query to group the data and to calculate sum, count the average and other types of total. फिर आप क्लिक करोगे डेटाबेस टूल्स टैब पे, सेलेक्ट करोगे रिलेशनशिप बटन को फ्रॉम द रिलेशनशिप ग्रुप एंड एक शो टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. सेलेक्ट द डिजायर्ड टेबल एंड क्लिक ऑन ऐड बटन. नाउ द सिलेक्टेड टेबल विल डिस्प्ले इन द ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप विंडो. सिमिलरली आप ऐड कर सकते हो अनदर टेबल टू द रिलेशनशिप विंडो. आप स्टार्ट कर सकते हो क्वेरीज टैब इफ योर रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन क्वेरीज, या फिर आप स्टार्ट कर सकते हो बोथ टैब इफ रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन बोथ टेबल्स एंड क्वेरीज. फिर आप क्लिक करोगे क्लोज बटन पे टू क्लोज द शो टेबल डायलॉग बॉक्स. मूव द प्राइमरी की of the parent table, that is student table, and drop it over the same field in child table, that is marks table. In our example, roll number क्या है यहाँ पे primary key. Now the added relationship dialog box displays. Click on create button. Access create कर देगा relationship between the tables. एक लाइन linking the two tables will appear जो denote करेगी that both have been linked on the basis of linked field. आपको क्लिक करना है सेव बटन पे ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार टू सेव द रिलेशनशिप एंड देन क्लोज द रिलेशनशिप विंडो बाय क्लिकिंग ऑन द क्रॉस बटन ऑन द रिलेशनशिप ग्रुप. क्रिएटिंग अ क्वेरी. एक्सेस डिस्पेंसेस टू वेज टू क्रिएट अ क्वेरी. क्वेरी क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो वेज है, पहला क्वेरी विजार्ड एंड दूसरा क्वेरी डिजाइन. क्रिएटिंग अ क्वेरी इन डिजाइन व्यू. तो डिजाइन व्यू में हम इंपोर्ट करते हैं मोर कंट्रोल ओवर अ क्वेरी. ये एनेबल करता है टू मेक अ क्वेरी फ्रॉम द स्क्रैच.
तो हमें सेलेक्ट करना है क्रिएट टैब को ऑन द रिबन एंड लोकेट करना है क्वेरीज ग्रुप। देन क्लिक करना है क्वेरी डिजाइन कमांड, एक्सेस क्या करेगा, स्विच करेगा टू क्वेरी डिजाइन व्यू। Then click add and then close. The selected table will appear as a small window in the object relationship pane. Design grid appear होती है at the bottom of the query design below the design canvas and the selected query table show करता है list of fields. डबल क्लिक करना है हमें field name पे that you would like to add in the query. They will be added to design grid. Bottom section of the query window आप also add कर सकते हो fields to the query by moving them from the field list to the design grid. Design grid same है as a spreadsheet with columns indicating each field in the query. Let's learn about the design grid. इसमें field होता है यानी कि name of the family field. First row of the design grid show करता है हमें selected field names from the table कि हमने अपने table से कौन कौन से field names select करे हैं. Table below each field name the name of present table. Show row exhibit करता है check mark. The fields with check marks show करता है information with the query is run. Now to hide the field during time हमें deselect करने हैं check mark by clicking on it. To reopen the show table dialog box while creating relationship हम click करेंगे on show table button on the design tab in the relationship group. फिर इसमें आता है यहाँ पर sort. ये जो फीचर है इसको हम यूज करते हैं to filter the data या तो in ascending order या फिर in descending order and this is optional. फिर आता है क्राइटेरिया. ये इंक्लूड करता है कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच रिकॉर्ड्स जो हैं वो फिल्टर होते हैं इन द क्वेरी आउटपुट. सॉर्ट इंडेक्स यहाँ पे जो वैल्यू है इंडिकेट करती है ऑर्डर इन विच सॉर्ट क्राइटेरिया विल बी अप्लाइड. और ये फीचर का यूज किया जाता है टू सेट मल्टीपल क्राइटेरिया इन अ क्वेरी. अलाइज ये ऑल्टरनेट नेम होता है फॉर अ गिवन फील्ड. आइडेंटिफाइंग सिंपल क्राइटेरिया हम आइडेंटिफाई करते हैं क्राइटेरिया को इन क्राइटेरिया रो ऑफ द डिजाइन ग्रिड. डिफाइन करना होता है हमें क्राइटेरिया वैल्यू इन क्राइटेरिया रो एंड द डेटा विल बी फिल्टर्ड अकॉर्डिंगली इन द क्वेरी आउटपुट. डिजाइन ग्रिड जो होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू रोज एंड कॉलम्स एंड हर एक कॉलम रिप्रेजेंट करता है field that will be included in the output. Let us understand it with the help of an example given below. To view the roll numbers and names of the student class 8, हमें डबल क्लिक करना है on the desired field in the table. Now हमें ड्रैग करना है cursor to the criteria row and टाइप करना है criteria is equals to 8 in the class field column. क्लिक करना है sort property पे in the f name column and set it in the ascending order. Click on close button of the query window to save the query. एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो हमसे पूछेगा that you want to save the changes of the design in query 1. Click yes button to save the changes. Save as dialog box will display. Define the query name and click on OK. Query name will display in the navigation pane. Make sure कि आपने select किया है all access object option from the drop down menu in navigation pane. फिर आप डबल क्लिक करोगे query name पे to view the query output. The query result will appear in the datasheet view which looks like a table. All the tables you select to include in your query will appear in small windows in the object relationship pane and her window contain करती है list of available fields within those tables. Identifying multiple criteria to see information whether two or more alternate criteria are satisfied. तो आप make sure करोगे use of criteria row in the design grid of the query. तो आपको क्या करना है एक वाइड रेंज ऑफ रिकॉर्ड में से यू वांट टू सी द रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास 8 एंड क्लास स्टार्टली. तो आप कर्सर को लेके जाओगे क्राइटेरिया रो पे एंड टाइप करोगे कंडीशन इक्वल टू 8 इन क्लास फील्ड. टाइप द सेकंड कंडीशन 9 इन द रो ऑफ द सेम कॉलम. नाउ आपको रन करनी है क्वेरी बाय क्लिकिंग ऑन द रन बटन ऑन द डिजाइन टैब. क्वेरी रिजल्ट अपीयर हो जाएगा डेटा शीट व्यू में एंड इफ यू वांट टू सेव योर क्वेरी आप क्लिक कर सकते हो सेव कमांड पे इन द क्विक एक्सेस टूल बार. When prompted to name it, they type the required name and then click OK. Next is making a query in Query Wizard. So the power and flexibility of query design in the entire reason to use database programs. They can quickly access, calculate and summarize the records that they pull from the various tables. To make a query in Query Wizard, do the following steps. आपको click करना है Create tab पे, select the Query Wizard button and Queries group. एक न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, वहां से आप सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, वो होगा ऑलरेडी सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट. क्लिक ऑन ओके. सिंपल क्वेरी विजार्ड स्क्रीन डिस्प्लेज एज शोन इन द फिगर. सेलेक्ट द टेबल जो इंक्लूड करता है डेटा इन टेबल क्वेरीज लिस्ट बॉक्स. नाउ ऐड द फील्ड्स दैट यू वांट टू हैव इन क्वेरी रिजल्ट. तो लिस्ट को फील्ड्स को ऐड ऑन करने के लिए आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे डिजायर्ड फील्ड्स इन अवेलेबल फील्ड बॉक्स. क्लिक ऑन द सिंगल फॉरवर्ड एरो बटन या फिर जस्ट डबल क्लिक ऑन द फील्ड.
You will observe that जो selected field है वो shift हो जाएगी to the selected fields box. Suppose you want to add the fields, then click on the double forward arrow button. It will shift all the fields at once. आप delete कर सकते हो selected fields को from the selected field box. To delete them one by one, click on the single backward arrow button या फिर delete at all. Click on the double backward arrow button. Once you have selected the desired fields, click on the next button. Simple query wizard screen 2 of 3 displays, prompting you to either select the details of some या फिर summary query. Simply click on the next button. In the next step, the simple query wizard screen है 3 of 3 emerges. Enter a new title for your query. Notice that your open the query to view information radio button is selected by default. Now click on the finish button. The query result will display in the datasheet view, and you will notice that query name is visible in the navigation pane. What are forms? Forms in Access एक database object है that you use to create a user interface for a database application. Bound form is one of the directly connected to a data source such as tables या फिर queries that can be used to enter, edit या फिर display data from that data source. Any form that you make from a table allow करता है हमें to view the data that is already in the table, and you can also add new data. Form can have different names from the table, yet it manipulates the same information and data to the corresponding table. If you change a record in a form, it will be reflected in table also. Data can be inserted, updated and deleted from a table using a form object. You can work on forms in the following three views. पहला आता है फॉर्म व्यू जिसको हम यूज करते हैं टू एंटर एडिट एंड व्यू डेटा. डिजाइन व्यू का यूज किया जाता है टू एडजस्ट द डिजाइन ऑफ योर फॉर्म. ये प्रोवाइड करता है हमें एक डिटेल्ड व्यू या फिर स्ट्रक्चर्ड व्यू ऑफ अ फॉर्म सच एज हेडर, डिटेल एंड फूटर सेक्शन. लेआउट व्यू का हम यूज करते हैं टू मॉडिफाई अपीयरेंस एंड साइज ऑफ डिफरेंट कंट्रोल्स ऑफ अ फॉर्म. मेकिंग अ फॉर्म. टू मेक अ फॉर्म हमें सेलेक्ट करना है टेबल या फिर क्वेरी नेविगेशन पेन जिसे हम यूज करना चाहते हैं एज डेटा सोर्स फॉर द फॉर्म. Click on Create tab on the ribbon. Select the Form option in the Forms group. एक new form create हो जाएगा and open in Layout view in which आप modify कर सकते हो the look of your form. आप observe करोगे 3 new tabs: Design, Arrange and Format display on the ribbon. Then if you want to modify या फिर enter data in the form, आपको click करना है Home tab पे, View button and then Form view. आपको use करना है Record navigation bar to move through the records in the form. After completing the data entry, आप सेव कर सकते हो अपने वर्क को by clicking on Save option in Quick Access toolbar या फिर Save option in the File tab. You will notice that form object gets added in the navigation pane. Next is formatting a form. After creating a form, you might want to modify its appearance. Formatting your form जो है वो helpful हो सकता है to make it look more consistent and professional. एन एक्शन क्वेरी क्रिएट करता है एक न्यू टेबल या फिर ऑल्टर करता है डेटा को और डेटाबेस को बाय एडिंग, डिलीटिंग, अपडेटिंग एंड अपलोडिंग डेटा टू इट. नाउ यूजिंग डिजाइन टैब. टू फॉर्मेट अ फॉर्म यूजिंग डिजाइन टैब हम क्लिक करेंगे लोगो पे इन द हेडर फुटर ग्रुप. इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले. सेलेक्ट एनी पिक्चर एंड क्लिक ओके. क्लिक ऑन टाइटल इन द हेडर फुटर ग्रुप. एंटर स्टूडेंट्स क्वेरी as the title for the form. Now click on date and time in the header footer group. Date and time dialog box will display. हमें चूज करना है required format of date and time, then click OK. You will find date and time placeholders in header section of the form. You can move these placeholders to the footer section also if you want to show date and time there. Click on themes in the themes group and click on desired theme from the drop down menu. Now using format tab, to format a form using format tab आप क्या करोगे, क्लिक करोगे background image पे in the background group. The browser button appears. Click on it, locate and choose the picture in insert picture dialog box and click on open button. Select करना है आपको field to which you want to apply conditional formatting जैसे कि class. Click on the conditional formatting option in the control formatting group. Click new rule in the conditional formatting rules manager dialog box. Under select a rule type आप select करोगे check values in the current record या फिर आप use कर सकते हो कोई expression. Under edit the rule description, select the rule, apply desired formatting and then click on OK. What are reports? Report एक object है in Microsoft Access that is used to display and print your data in an organized manner. Navigation pane वो होता है जहाँ पे हम find कर सकते हैं all the saved reports in the database. Report can be created exactly in the same way as we have created a form. Only change is that after selecting the create tab हमें click करना है report पे in the report group. Access create कर देगा एक report and place कर देगा all the fields of the selected table in a report.
Few tabs display on the ribbon while reports are created. Design, arrange, format, and page setup. Click on Save option on the Quick Access toolbar to save the report. Report objects get added in the navigation pane. Report consists of information that is pulled from tables or queries as well as information that is stored with the report design such as labels जो provide करते हैं underlying data. They are also known as reports record source. There are four different types of views in which report can be appeared. Report view जहाँ पे आप view करते हो data of the report in this view but cannot make changes in the design. Print view यहाँ पे ये enable करता है हमें that how the report will look when we print it. Layout view ये हमें एक view देता है जो resemble करता है what the report will actually look like to the user and in this view आप modify कर सकते हो design को अपने report के to some extent जैसे उसका size या फिर different controls. Design view ये जो view है ये show करता है only the structure of the report which can be changed and customized as per the requirement. This view does not show the underlying data but ये show करता है हमें expression that is used to create content. For example, you may find date function on the header section and report but not actual date. Formatting a report आप format कर सकते हो report को जैसे apply कर सकते हो उसमें different options present on the design and format tabs. Report consists करती हैं controls that provide labels, field values, lines, page numbers and more that make up the report. Now printing a report आपको अपनी file tab को select करना है then click either in the print option या फिर आप select कर सकते हो print preview view option to print a report. ये view show करेगा कि how your report will appear on a page. ये also enable करता है to set the page orientation, the page setup, etc. If required, change the page size, margin width, and page orientation, applying the related commands on the ribbon. Click on the print option. Print dialog box will display. Set the required print option and then click OK. Exporting a report. तो report header. Report contain करता है एक header and footer जो run होता है along the top and bottom of each page respectively. Header and footer can consist of static text, images, lines, rectangles, background image, and expression. हमें click करना है drop down arrow पे in the view button on the home tab and select करना है print preview form from the drop down list of options. Now the report will be opened in print preview layout. Ribbon will show the commands associated with this option. On the data group हमें click करना है drop down arrow पे of the more button and select word. The export RTF file dialog box will display on the screen. हमें select करना है location where we want to save the report and हमें उसे एक suitable name provide करना है. You will also find export options. Select the option as per your requirement. Click OK. Final screen जो है वो display हो जाएगी on the screen, informing you about the successful completion of exporting process. Then click on close button. Find the word file where the report has been exported and open it. Let's revise the chapter. Query एक simple question है that you ask to find particular information from a database. Microsoft Access provide करता है different types of queries. Select parameter, cross-tab, action, and SQL query. Relationships are links that related to a field in one table with the same field in another table. Access provide करता है two ways to create a query, through the query wizard and through the query design. Criteria feature comprise करता है condition on the basis of which records will be filtered in query output. Form एक piece of paper है on which user fills the desired information in the specific fields. Report is an object in MS Access that is used to display and print your data in organized manner. Let's do the exercise of the chapter. So first is tick the correct option. Access can create a query in how many ways? 1 and 2, both A and B. Which of the following is a type? Both A and B. Which of the following is applied to modify the appearance and size of different controls of a form? Layout view. How many views does Access provide to show form? 4. And which key specifies relationship between two tables? Primary. Fill in the blanks. Dash is a simple question that you ask to find specific information from the database. Query. In a query, the dash feature is used to set the condition on the basis of which the records are filtered. Filter. Dash is used to filter the data either in ascending or descending order. Sort property. And dash is a piece of paper on which user fills the desired information forms. Let's do true false. Queries allow us to get back information from one or more tables that meet a particular condition. True.
A report is created exactly the same way as forms are created. It is false. Then, to specify the multiple criteria, the OR property is used in a query. True. Form view is used to enter and edit and view data. True. The sort property is used to filter the data either in ascending or descending order. True. Relationship works by matching a field with the same name in two tables. True. User cannot format a form. False. Queries are used to view, change, summarize, and analyze data in different ways. False. So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise it once again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.